lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. So in today's video, I'm gonna do my first ever Cuffs and Lashes haul. Now in case you don't know, Cuffs and Lashes is owned by Nidhi Katiyar, who's also a content creator. I personally love her content. In case you haven't checked her videos, I will surely leave a link to her channel in the description box below. Now let me quickly tell you that abhi Cuffs and Lashes pe unki Black Friday sale chal rahi hai. It started from the 26th of November and it's gonna go till the 30th of November. So you still have 3 days to shop from the Black Friday sale. क्योंकि guys इस Black Friday sale में ना इतने सारे discounts हैं, like you will get up to 70% off in this sale. इतनी सारी brands पे इतने सारे discount offers चल रहे हैं and Cuffs and Lashes के खुद के products पे भी up to 50% off चल रहा है and I'm so excited to share my haul with you guys. Also before starting with the haul, let me quickly tell you that from today, like from this video onwards, I'm starting this giveaway series which is called #50k lovelies. So basically we have hit 50,000 subscribers on this channel and I'm so grateful to each and every one of you जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो या फिर कभी लाइक किया हो, कमेंट किया हो और जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, एक भी अपलोड मिस नहीं करते हैं. I love you guys even more. So thank you so much to each and every one of you. I couldn't be more grateful to you guys. Now since I want to give all the love back to you, so obviously मैं 5 giveaways रखने वाली हूँ अपने चैनल पे. So आज से लेके नेक्स्ट 5 वीडियोस तक मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी, हर वीडियो में एक गिवअवे होगा आप लोगों के लिए. So the series is starting from today, this video onwards. And yes, now without any further ado, let's just get started with today's makeup haul. So I got a few products from Swiss Beauty, Cuffs and Lashes itself. Then we have some products from 20 Something, which is also Nidhi's brand. So I'm just gonna start with the Swiss Beauty primer. So it's the highlighting primer. This is what it looks like and it is so good, you guys. It's like an illuminating primer. This is what the actual packaging looks like. Now it comes with a pump like this and you just need a teeny tiny amount of it. And you know what guys, इतनी सुंदर ग्लो दे देता है ना ये प्राइमर आपके स्किन पे. इसको मैंने आज यूज किया है फाउंडेशन लगाने से पहले एंड आई कैन सी दैट माई स्किन इज एक्चुअली ग्लोइंग फ्रॉम विद इन. यू कैन से एक ग्लोइंग फ्रॉम विद इन जैसा इफेक्ट देता है ये. एंड इसका जो फॉर्मुलेशन है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है. आई थिंक इट्स लाइक अ हिडन जेम जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है. सो डेफिनेटली चेक दिस आउट. नेक्स्ट अप वी हैव दिस माइसेलर क्लेंजिंग वाटर फ्रॉम 20 Something. आई जस्ट शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक. मैंने इसको अभी तक यूज तो नहीं किया है, but this is what it looks like. It comes in this spray bottle which is again very convenient to use. Next up we have one more makeup remover and the packaging is so fancy. So it's from Swiss Beauty. It's their cleansing makeup remover in the variant Blue Tequila. This is what the outer packaging looks like. I'll just show you what the actual packaging looks like. It is so fancy, like I said. So this is what the makeup remover looks like. I still have to use it to check the consistency and everything, but I had no clue कि Swiss Beauty का कोई इतना fancy सा makeup remover भी आता है. Now इसकी MRP is not mentioned on the outer packaging, but it's definitely very affordable. Next up, I got one more thing from Swiss Beauty and it's their eye primer. Oh my god, this is like another hidden gem. मैंने इसको आज ही use किया है अपना eyeshadow लगाने से पहले and it just preps the eyelids so nicely for the eyeshadow. So it looks very beautiful. Comes in this very pretty bronze sort of a packaging and it has this wand as well. थोड़ा सा लगा के you can just blend it with your fingers. It's very smooth. मैं वैसे हमेशा अपना regular primer ही use कर लेती थी अपनी eyelids पे, but I'm so happy कि I got this eye primer क्योंकि अब से I feel के और अच्छे से eyes prep हो जाती हैं when you specifically apply an eye primer. Next up I got 2 metallic liquid eyeshadows. You guys know कि अभी मैंने recently एक Swiss Beauty का metallic eyeshadow लिया था and मैं उसकी इतनी बड़ी fan हो गई थी, मतलब I just loved it. So I just thought कि क्यों ना मैं ये Mars के liquid eyeshadows try करूँ. These are metallic liquid eyeshadows exactly like Swiss Beauty eyeshadows that we get. Now this is what the actual packaging looks like. It looks very pretty, luxurious, high-end sort of. And the shades are Milky Way 04 and Electra Heart number 6. Now आज मैंने जो eye look create किया ना guys, मैंने exactly अपने sweatshirt से matching सबसे पहले आई शेडो लगाया. उसके ऊपर उसको थोड़ी एक अच्छी ग्लैमरस लुक देने के लिए मैंने ये वाला आई शेडो ऊपर से लगाया, मेटालिक आई शेडो in the shade Electra Heart. I feel it is very pretty. Now honestly speaking guys, मुझे इन मार्स के लिक्विड आई शेडोज की फॉर्मुलेशन काफी बेटर लगी Swiss Beauty वाले आई शेडोज से. You know why? Because एक तो ये बहुत ज्यादा ऐसे लाइट वेट फील हो रहे हैं आईज पे. अनदर थिंग इज, जब इसको आप एक बार सेटल डाउन होने दोगे ना एंड आप इसको मिटाने की कोशिश करोगे अपने आईज से,
ये हटेंगी नहीं अपनी जगह से, आपके फिंगर पे थोड़ा बहुत ग्लिटर आ जाएगा ऑब्वियसली, बट दिस विल नॉट स्मज। मुझे दोनों ही शेड्स बहुत ज्यादा सुंदर लगे, एक्सट्रीमली अफोर्डेबल एंड कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी। मतलब आंख बंद करके यू कैन डेफिनेटली बाय दीज। अभी तो शादी सीजन भी है, सो आपको ये काफी यूज में आ जाएंगे। नेक्स्ट अप आई गॉट अ वेरी अफोर्डेबल ब्राउ पेंसिल फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड SFR Color. The shade is called 540 Chocolate. Now this is what it looks like. It comes in this retractable sort of packaging, and the thing that I really like about this eyebrow pencil is कि ना ये angular type की है. So basically it's not एकदम ऐसे sharp tip वाला eyebrow pencil नहीं है, ये एक ऐसे एंगल टाइप का बना हुआ है जिससे आप आराम से अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी गाइज, इट इज क्वाइट नाइस। इट्स नॉट एक्सट्रीमली स्मूथ और वैक्सी, थोड़ा सा हार्ड है ये डेफिनेटली, बट उतना भी नहीं है कि बहुत हार्शली आपको लगाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दिस इज व्हाट द शेड लुक्स लाइक। अनदर थिंग दैट आई गॉट इज दिस फेस पैलेट फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज। नाउ इस पैलेट को मैंने बहुत बार देखा है निधि की वीडियोज में, शी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट इट समटाइम्स इन हर वीडियोज, एंड आई वाज सो एक्साइटेड यू कैन से टू ट्राई आउट दिस पैलेट, क्योंकि इसमें आपके यू नो हर चीज मिल जाएगी आपको। आई शेडोज भी मिल जाएंगे, देन यू गेट अ ब्राउन्जर, you get two very beautiful blushes as well as a highlighter. So this is what the palette looks like, and the shades are so beautiful, so pigmented. And मैंने actually आज ये वाला shade use किया है as my highlighter, and it's नॉट एट ऑल चंकी चमकीला, वो जो एकदम ऐसे पैची नहीं लग रहा है, काफी सुंदर एकदम ऐसे सीमलेसली ब्लेंड हो गया है मेरे स्किन में। सो यू गेट 7 आई शैडो, कलरफुल आई शेडोज इन दिस पैलेट। इफ यू गाइज नो मी, यू नो दैट आई लव कलरफुल शेडोज। देन वी हैव दीज 2 ब्लशेज एज वेल, जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी है। नाउ दिस ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज अ हाईलाइटर इफ यू आर यू नो वीटिश, डस्की और स्लाइटली डीपर यू कैन से। एंड लास्टली वी हैव अ ब्रॉन्जर शेड राइट हियर। आई फील कि बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड अफोर्डेबल पैलेट है। आई थिंक इसकी MRP कुछ 400 रुपए, या इट्स फॉर 399 रुपीज, एंड आई एम श्योर अभी डेफिनेटली आपको ये ब्लैक फ्राइडे सेल में और ज्यादा डिस्काउंट पे मिल जाएगी। एंड आई टोटली फॉरगॉट टू टेल यू गाइस कि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मिरर भी है जो मैंने अभी छुपाया हुआ है, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि तुमको मेरे कमरे की सारी मेस दिखे अभी। सो या यहाँ पे बहुत बड़ा सा मिरर भी आपको मिलता है, विच आई थिंक कम्स रियली हैंडी। नेक्स्ट अप आई गॉट अ लिपस्टिक, एंड इट्स फ्रॉम ब्लू हेवन। द शेड इज कॉल्ड 706 Velvet Maroon. It's a very beautiful maroon color. This is what it looks like. The formulation is too good, you guys. It's creamy. It's like a creamy matte, you can say, and I just love the shade. It's beautiful. Next time I got this 20 something ka makeup fixer. It's enriched with aloe vera and vitamin E. Also, it's suitable for all skin types. This is also paraben and cruelty free. I'm just going to show you what it looks like. It comes in this छोटी सी travel size spray bottle, and इसको मैंने आज यूज किया है अपना मेकअप सेट करने के लिए। एंड मुझे मेकअप किए हुए काफी टाइम हो चुका है, एंड एज यू गाइज कैन सी कि मेरा मेकअप लाइक माई बेस मेकअप एक्चुअली लुक्स इंटैक्ट। सो दिस इज डेफिनेटली अ रियली नाइस अफोर्डेबल ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू मेकअप फिक्सर्स। नेक्स्ट अप आई गॉट अ फ्यू पेयर ऑफ इयररिंग्स, क्योंकि कफ्स एंड लैशेस पे इयररिंग्स भी अवेलेबल है, एंड अभी उनकी ब्लैक फ्राइडे सेल पे दे आर अवेलेबल एट अ फ्लैट 50% ऑफ। सो डेफिनेटली चेक इट आउट. They have a wide variety of a lot of different types of earrings. I'm just gonna start with this one, which looks very very pretty. I remember कि मैं इस टाइप के सेम टाइप के इयररिंग्स गोवा से लाई थी, एंड मैंने काफी टाइम पहने थे वो, बट वो ऑक्सीडाइज हो चुके थे। उसके बाद से मुझे इस टाइप का कुछ दिखा नहीं था ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में। सो या दिस इज व्हाट द इयररिंग्स लुक लाइक. आई फील इट्स जस्ट गोना लुक सो प्रिटी विद योर इंडो वेस्टर्न लुक्स, और इफ यू लाइक टू वेयर थोड़ा मिनिमल ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज में भी अगर मिनिमल ज्वेलरी पहनना पसंद है, सो दिस इज डेफिनेटली फॉर यू. द क्वालिटी इज रियली रियली गुड. अनदर वन दैट आई गॉट इज अगेन वेरी वेरी ब्यूटिफुल, यू गाइज. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. देखने में तो थोड़े ऐसा लग रहा है कि हैवी होंगे, बट इट्स एक्सट्रीमली लाइट वेट. मतलब मैंने इसको अभी ट्राई किया था, लग भी नहीं रहा था कि कानों में कुछ पहना हुआ है, इतने ज्यादा लाइट वेट है. इट हैज दिस ब्यूटिफुल फ्लावर, बीच में मिरर है, यहाँ पे भी ऐसे मिरर्स लगे हुए हैं. अनदर वन दैट आई गॉट इज again very beautiful. I'll just show you what it looks like. So this is what the earrings look like. यहाँ पे बहुत बड़ी से mirror detailing है. Then we have rhinestones over here as well. Looks very very pretty. You can say it's a very beautiful statement piece. Definitely check out these earrings on Cuffs and Lashes. ये तो कुछ भी नहीं है, उनके पास बहुत सारी variety है. And now let's move on to the stuff that I got in Diwali PR. So I got this very nice wooden box
from Cuffs and Lashes. यहाँ पे Cuffs and Lashes लिखा है, then यहाँ पे भी it says Cuffs and Lashes by nidhi katiyar. Now I thought that this box is only like a PR box जो कि सिर्फ ऐसे YouTubers and bloggers को ही मिला होगा. But you know what? You can actually buy this on Cuffs and Lashes. अभी कुछ 999 rupees का ये डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा. It's a very nice makeup storage box. In fact, you can store anything in this. It's not compulsory कि आप इसमें सिर्फ मेकअप ही स्टोर कर सकते हो. So this is what it looks like. काफी ज्यादा spacious है. वैसे तो I've already done a PR unboxing on my Instagram stories, but I know since a lot of you guys are not on Instagram, so I just thought कि क्यों ना मैं ये सारी चीजें आपसे अपने चैनल पे भी शेयर करूं. So the first thing that I got is this Z palette. This is an empty eyeshadow palette, guys, and कुछ इस टाइप की दिखती है ये अंदर से. And आप अपने से सिंगल eyeshadows को एक ही जगह स्टोर करके रख सकते हो. Now the one that I have is actually a smaller size. इससे बड़ा भी एक साइज अवेलेबल है, so आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. I really like the quality. काफी sturdy इसकी पैकेजिंग है. Next up, I got all the 8 shades of their newly launched ColourPop liners. They are extremely pigmented. बहुत ही अच्छा formulation है. It's smudge proof, also waterproof. And before I take you through the shades, let me tell you कि I have not seen any other Indian brand offering इतने सारे colors in eyeliners, you know. मतलब इससे पहले भी I have tried couple of colorful liners from different brands, but उनकी shade range is blah. I'm being very honest with you guys. I've not seen any Indian brand offering like a white liner, pink, yellow, you know, orange, red, blue, purple. बहुत सारे shades हैं and you guys know I love colorful liners. ये एकदम matte liners हैं. They are cruelty free, paraben free. Although इसमें से एक दो shades ऐसे हैं जो आपको layer करने पड़ेंगे. One stroke won't be enough. For example, you have to layer the white one, yellow one. 2 बार इसको आपको लगाना पड़ेगा एक के ऊपर एक, तभी जाके you know एक opaque finish मिलेगी आपको. But other than that, I feel इनकी pigmentation काफी सही है. So the white one is called Khalisi. The yellow one is called Bumblebee. The next one that we have is this very beautiful baby pink color and it is called Jaipur Dreams. Then we have this very beautiful dark pink color and it's called Gulabo. Now I honestly love this shade of pink, but the only issue with it is ये थोड़ा सा ना stain कर देता है, you know. So basically जब आप इसको remove करोगे वो थोड़ा थोड़ा pink pink stain रह जाएगा आपके eyes पे, but it's definitely gonna go away in some time. So yeah, ये थोड़ा stain करता है. Then we have this very nice bright orange color and it's called Zafran. Then we have this really nice sky blue color which is called Sky Me. The red one is called Gulkand. I honestly have not seen any brand manufacturing a red colored liner. Like I am just so happy with this entire ColourPop collection by Cuffs and Lashes. अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया अभी तक, please चेकआउट कर लो. And the last one is this very beautiful purple colored liner. It is my personal favorite out of all the 8 shades, and it's called BTS Love. So obviously, if you're a BTS fan, get this one for yourself. The next thing that I have is this makeup brush holder in the size small. So basically अभी Cuffs and Lashes पे ये जो small size है ये सिर्फ yellow में ही available है as of now, but इसमें एक large size भी आता है and I think it's available in 5 colors. Yellow, mint green, then there's I think pink, blue and lastly a black one. So आप वो वाला size भी check out कर सकते हो if you have like a lot of makeup brushes to store. So yeah, this is what the smaller size looks like. Let me say that this is of a very 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 good quality and it opens up यहाँ से. So ऐसा करके ये खुलता है and मुझे ये मेकअप ब्रशेस भी PR में ही रिसीव हुए थे. Although it's a small size guys, but ये आराम से तुम्हारे 15 से 20 ब्रशेस स्टोर कर लेगा. अभी इसमें कुछ 14 ब्रशेस हैं. So I'm just gonna show you the makeup brushes now. मैंने आज का अपना ये मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए इनमें से कुछ मेकअप ब्रशेस यूज किए हैं and मैंने इतने अच्छे रिव्यूज सुने थे about Cuffs and Lashes brushes. This is what the brushes look like. We have a few eye brushes, then we have a few face brushes. आज मैंने ये highlighter brush भी यूज किया है. I feel इन सभी brushes के bristles बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं गाइस. दे आर ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी. यू कैन चेक आउट दीज ब्रशेस एज वेल. मैं इनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इफ यू वांट जस्ट वन ब्रश सो आप इनको इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एंड ऑफ अ वेरी 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 गुड क्वालिटी. आज मैंने ये हाइलाइटर वाला यूज किया था. देन आई ऑल्सो यूज्ड अ वेरी नाइस ब्लेंडिंग ब्रश. So this is the blending brush that I use. It's quite fluffy, quite nice. These are definitely paisa vasool. You can invest your money on this. I can guarantee you, you will love it. Now I got one more thing in the PR guys, but क्योंकि ये अभी तक Cuffs and Lashes पे launch नहीं हुए हैं, so I cannot really talk about this product in this haul video. But I'm just gonna show you what it is.
So it's these cover pots, and I am so excited for the launch. You know why? Because I love it. They are so creamy, and I can assure you that you are going to love it too. So stay tuned for the launch. Obviously आप Cuffs and Lashes का Instagram page follow कर सकते हो, because वहाँ पे आपको updates मिल जाते हैं. And with that, I am pretty much done with the Cuffs and Lashes Black Friday sale haul. Definitely check out this sale, guys. It's gonna go till the 30th of November, and you will get up to 70% off. And now let's quickly discuss about the giveaway. I know you guys have been waiting for it, so I'm just gonna give away a few makeup products in this giveaway number 1. And इस giveaway में total 5 products हैं. 4 are makeup products and 1 is a skincare product. Now the first thing in this chutku sa hamper is this Swiss Beauty Ultimate Eyeshadow Palette in the shade 07. Yeah, it's a very beautiful colorful eyeshadow palette, guys. And मैंने 2 मंगवाए थे, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए. So मेरा वाला तो कहीं पड़ा होगा, but yeah, this is a new one. Another thing that you'll be getting is this purple lip crayon. The shade is called This to That number 9. I just love this shade, and this is what it looks like. It's a beautiful shade, and I am sure कि काफी सारे Indian skin tones को ये suit करेगा. The next thing that you'll be getting is this Stay Quirky's xoxo lip pencil. The shade is called Lots of Love. So this is what it looks like, guys, and you can see कि काफी सुंदर सा pink shade है. The fourth product is this Stay Quirky eye pencil, and the shade is called Lure Me Byzantium. I don't know how to pronounce it, but the shade number is 4, and I'm just gonna show you this shade. I think it's a very nice purple. Yeah, so it's this very beautiful dark purple sort of an eye pencil. And the last thing that you'll be getting is this rosehip serum from Good Vibes. This is so good, you guys. मैंने इसको पहले use किया हुआ है, and I really like this serum. So these are all the products that the winner number 1 will get. Now talking about the giveaway rules, the rules are pretty simple. You just have to be a subscriber of this channel. If you have not subscribed yet, please कर लो. The second rule is that you have to follow me on Instagram. मेरे profile का link नीचे description box में मैं mention कर दूंगी. And the last rule is that you have to tell me in the comments कि आपको इस makeup haul में से सबसे अच्छा क्या लगा, and if there's something that you are looking forward to try. And you are done. Now this giveaway will end after 1 week. एक हफ्ते तक ये giveaway चलने वाला है. And जब मैं सारे giveaways announce कर दूंगी, तो मैं साथ ही में like 5 गिवअवे के विनर्स मैं एक साथ ही अनाउंस करूंगी. So that's pretty much it. I really hope you guys would participate, and if you like the video, then please make sure that you give it a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. In case you guys would like to connect with me on my social medias, then I would surely leave all the links for you in the description box below as always. And yes, I'm gonna see you next time. Till then, you all please stay safe, stay positive, and be kind to yourself and others. Bye bye.